What is up, folks? So, today is a good day for a Reddit reaction because I see a lot of really good posts on my subreddit. By the way, for people who want to join my subreddit, the link is in the description. Now, let's have a look. Cool. First post. 1966 के वक्त वैज्ञानिकों ने एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर एक रूम के अंदर 5 बंदरों को रखा। वहाँ एक सीढ़ी रखा और उस पर कुछ केले रख दिए। जैसे एक बंदर उस केले को लेने ऊपर चढ़ा, वैज्ञानिकों ने बच्चे बंदरों पर ठंडा पानी डालना शुरू कर दिया। बंदर नीचे आया, पानी रुका और जब दूसरा बंदर ऊपर चढ़ा तब फिर से ठंडा पानी गिरना शुरू हो गया। अब जैसे ही कोई बंदर सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश करता है, उसे सब बंदर मिलकर मारने लग जाते। वैज्ञानिकों ने उनमें से एक बंदर को निकालकर वहाँ दूसरा बंदर रखा। नए बंदर ने भी ऊपर चढ़ने की कोशिश करी, लेकिन सब मिलकर उसे मारने लगे। नए बंदर को बस इतना समझ में आया कि ऊपर चढ़ने से मार पड़ती है। वैज्ञानिकों ने दूसरा बंदर भी बदला, उसने भी कोशिश करी और उसे भी मार पड़ी। अब एक के बाद एक सारे बंदर बदल दिए गए। वैज्ञानिकों ने पानी बरसाना बंद कर दिया और अब इनमें से किसी को नहीं पता था कि ऊपर चढ़ने से क्या होता है और ऊपर चढ़ने वालों को क्यों मारा जाता है। लेकिन क्योंकि एक परंपरा या रिवाज बन चुका था, इसलिए उनमें से कोई भी बंदर ना ही ऊपर चढ़ना चाहता था और ना ही किसी और को चढ़ने देना चाहता था। हजारों साल पहले कोई प्रथा बनी होती है, कोई रीति रिवाज होता है जिसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है, लेकिन वो वजह खत्म होने के बाद भी वो प्रथा चलती रहती है। किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती है ये पूछने की कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। बस सबको ये पता होता है कि ऐसा ही होता है। I totally agree with this, and I see how this can lead to a lot of unquestioned traditions and rituals that we follow. Now, about Sandeep Maheshwari saying this, I don't really know a lot about Sandeep Maheshwari. I've not watched a lot of his content. My understanding is that he does come from a religion promoting background. He doesn't talk about that, but I think some of his ideas do revolve around religion somehow. I remember there was this controversy where he said something about Hindu philosophy and stuff. So anyone who knows more about him in detail, let me know in the comments. After that, we have this video by Acharya Prashant. How do you deal with your family and people who are illogical, dumb? Okay. In astrology cannot be a rational person. Let there be a thesis. Let there be a set of propositions that are available to examination. Nobody will jail you for your beliefs. You want to believe in something, then continue to believe in it. But don't term it as logical or rational or scientific. There is no logic, there is just a story. You may love a story, fine. That's your subjective choice. But don't call it a science. It's a story. And quite an entertaining story. Also quite profit-yielding story. If I look at the size of the astrology industry today and the number of astrology apps that are available on Play Stores, etc. So it's a story that is making big money for a lot of storytellers. Right? It's between them and their clients. The clients choose to pay just to hear stories. Who am I to object? I totally agree with this. And I've said some of the exact same things in my videos in the past. Acharya Prashant, he's a pretty rational, logical dude. I do know that he promotes Vedanta, which again is, a philosophy, a lot of ideas, some of which make empirical claims without any evidence. So they somehow seem to contradict being rational and promoting Vedanta. So I don't really understand what he's all about. Again, people who do have more information with them, let me know in the comments. But that is about Acharya Prashant. In order to play the role of an insane and mentally Zakir Naik's video for 2 hours. Oh man, let's look at this. Yeah, this dude is, he says a lot of religious stuff on Instagram. I've seen him. ये जो भाप आप अंदर देख रहे हैं, ये सांसी ही हनुमान जी है। बचकाना लगता है ना, रामायण और हनुमान चालीसा दोनों में ये कहा गया है। राम और रावण दोनों मनुष्य रूपी थे। मनुष्य शरीर जब बनता है तो नाभि के पास एक अग्नि होती है जिसे जठराग्नि कहते हैं। यही खाना पचाने में मदद करती है, यही सेक्सुअल चीजें करने में। This is what I really hate when people make empirical claims like these that are not based on any evidence. में मदद करती है। तभी वैसा करते समय शरीर गर्म हो जाता है, मृत्यु के बाद शरीर ठंडा हो जाता है। तो ये अग्नि ही हमें चला रही है। अब ये अग्नि अगर जठराग्नि बनकर एक्टिव हो गई तो काम we have a conclusion. तो यहाँ अग्नि हमें चला रही है। This Agni is what keeps us going. बढ़ेगी, लेकिन ये अग्नि अगर ऊपर उठकर चिताग्नि बन गई तो माइंड की पावर उस हद तक बढ़ जाएगी कि आप सोच नहीं सकते। लेकिन ये करे कैसे? इसी का इलाज रामायण और हनुमान चालीसा में है। रामायण में भगवान श्री राम ने किनका साथ लिया? हनुमान जी का। हनुमान जी कौन है? वायु, पवन कुमार।
हनुमान चालीसा में एक लाइन आती है, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बुद्धि की जब जरूरत पड़े पवन कुमार का नाम लेना। I don't even want to watch the rest of it. I've shown you like a lot of bullshit that he's saying. I can smell the rest of it is all bullshit. I don't see the point. Praying for good marks in exam, not praying. They both lead to the end result of getting marks based on your effort. Astronomy, astrobiology, and astrophysics, and astrology. Imagine linking wearing jewelry to reproductive health. फिरंगियों को देखकर हर कोई इयररिंग्स पहन रहा है, वो लोग तो सिर्फ कूल बनने के लिए पहनते हैं। बचकाने वेद संस्कार जो कि हमारी भारतीय संस्कृति के 16 मेजर संस्कारों में से एक है, जिसे बचपन में किया जाता है। और ये ऐसे 5 रीजन जिनको सुनकर आप ईयर पियर्सिंग जरूर करवाओगे। पहला, ईयर पियर्सिंग करवाने से मेंस का स्पर्म काउंट प्रोडक्शन बढ़ता है, फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल उनकी हेल्दी और मेंटेन रहती है। दूसरा, show me the evidence, bro. Showing some articles and highlighting some lines is not evidence. This could be an equally biased article, just like this guy making this video could have been written by someone similar to that on some blog or something. Highlighting some lines doesn't make it evidence, bro. बच्चों में ईयर पियर्सिंग करवाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ईयर लोब्स में ऐसे मेरिडियन पॉइंट्स होते हैं। Meridian points? What the fuck is that? Right? Oh man. Again, empirical claims without evidence. जो कि ब्रेन के राइट हेमिस्फीयर को लेफ्ट हेमिस्फीयर से जोड़ते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों के प्रॉपर ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। इस आयुर्वेद के हिसाब से जहाँ ये people who haven't done this don't develop properly in their childhood, right? ईयर पियर्सिंग करवाई जाती है, वहाँ पे 2 ऐसे एसेंशियल एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं जो कि तुम्हारी प्रॉपर Acupressure is pseudoscience. I've spoken about it before, but it's basically pseudoscience. You can look up acupressure charts. Those don't correspond to any evidence. पर ईयर हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा, ईयर पियर्सिंग करवाने से ओसीडी, नर्वसनेस और एंजाइटी जैसी चीजें बहुत हद तक कम हो जाती है। और यही How do you test this claim, bro? Do you have any large-scale studies that support this point? इस वेस्ट में ऑरिकुलर थेरेपी के नाम से जानी जाती है। ईयर पियर्सिंग करवाने से आपका बॉडी का एनर्जी फ्लो मेंटेन रहता है, इससे आपका डाइजेशन भी इंप्रूव होता है और बहुत हद तक ओबेसिटी के चांसेस भी कम हो जाते हैं। अगर आपको भी Right. Dude, untestable claims. If someone loses a lot of weight, are you gonna attribute it to the fact that their ears? ईयर पियर्सिंग करवाना है, और अगर आप मेल हो तो आपको राइट ईयर में पहले कराना है, और अगर आप फीमेल हो तो आपको लेफ्ट ईयर में पहले कराना है, क्योंकि राइट मैस्कुलिन है और लेफ्ट फेमाइन है। और भी ऐसे इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए फॉलो जरूर करें। Yeah, just don't follow this page, whatever happens. Next post. No one says that Ayurvedic herbs don't work, but it lacks vigorous. Look at this meme, dude. Liver failure. Oh man. When rationalists argue, how can you question my beliefs like that? It's the truth. What is the one fact about the universe that blows your mind the most? One's just the size and scale of it. I mean, in the piece of the universe we can see, there are something like, roughly, 2 trillion galaxies. We haven't counted them all, but that's an estimate based on surveys of the local universe. 2 trillion. 2,000 billion galaxies. And each galaxy is, let's say, around the size of the Milky Way. Some are bigger, some are smaller, but the Milky Way has 400 billion stars in it. It takes light over 100,000 years to cross a galaxy, and there are 2 trillion of them in the piece of the universe we can see, and we're very sure that that piece that we can see is a small bit of what may be an infinite universe beyond. We don't know, actually. And I always say, don't get worried about that, because nobody can picture it. It is impossible to visualize the scale of the universe. Yeah, dude. Brian Cox, one of the greatest science communicators of our time. Cox, being an atheist abroad. Okay, not a very perfect meme. But I think that's all the time we have for today. By the way, guys, live stream coming soon. Live stream coming soon. I will see you in the next one.